भाई वाटर में आ गया भाई मैथ्स का टेस्ट वाटर में भाई ये उनको देखना केमिस्ट्री तो होगा नहीं क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं सिखाया दूसरा घंटा खत्म हो गया वो हो गया वो खुशी खुशी चालू कर रहे हैं अभी वो खुशी जी रहे उनका कौन सा अभी वाटर है केमिकल है वो दोनों ना ले एक ले वाटर ले लो बस वो करो हम क्या ले वाटर हार्ड होने का इतना चेंजेस बहुत इजी है दो पेज का चैप्टर है बस ये क्या बोल रहे हैं रे हम क्या पे लेंगे भाई वो लेंगे ना So you considering to select the exam portion, test portion. How can we select? It's okay. Relax. I was just resting next to my exams and after that brief rainfall today we are meeting. Brief rainfall. Just put up this. Good, huh? And chapter number 2 or chapter number 3? 2 is there. Earth structure we have completed. Yes. Sign against him. We'll get my volume also. ये मार्क्स कब पता चलने वाला है Thursday कोई पता नहीं पर मेल को ट्यूसडे पर ही आता है हां मेल पहले आता है और दस की है नहीं मैं कोई नहीं बताता है पर मैसेज में भी नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा मैं फोन स्विच ऑफ करके रख दूंगा और चीजें हद से ज्यादा नहीं We had completed chapter number 1 and 2, and we are in chapter number 3. That also completed. Rotation and revolution. So this was your homework. You did. So I am in chapter number 2. 3. 3. That also we had gone, I think. Distance. Rotation and revolution. हाँ थोड़ा सा समझ लिया था सर ये भी देखो So what do you understand by these two words? Can I say 24 hours? Yes. Here? Yes. 365 days? Almost, huh? Not exactly 365. So what is rotation? 365 days and 4 hours. And how many seconds? Okay, she was the person who was absent, is it? Riya. Yes. Okay, no problem. And Ash is he. And he is Advait. Good. So, when we talk about this rotation and revolution, I think it's so easy to tell me what is rotation and revolution. More than what is rotation and revolution, you should say what is its importance. Day and night. Rotation. Seasons. 4 seasons. Does India have 4 seasons? Yes. If the Earth stop rotating, days permanently on that part where the sunlights are falling, permanently night on that side where the sunlight is not falling. And then I have told you the Earth axis is tilted. Now from the origin, how much degree? 8. 8? 8 degree. This 23.5 degree. Correct? तो मैंने बोला था ना ये 90 डिग्री है बट अर्थ एक्सिस ऐसा है ना so this is my NP and this is my SP so how much degree it is 23.5 degree something है ना the rest is 64 or 66 degree correct है so every time we say rotation every time we say revolution so earth rotates on its own axis Earth revolutes on its own. इधर तो एक्सिस है revolution किस पे होता है on its own orbit. How is the Earth's orbit? Circular. It is elliptical. Yeah. Now I remember. Now you remember. That's good. है ना ऐसे आप बताया ना मैंने. This is the sun. Remember I told you? Yes. But then I have told you what is equinoxes.
Simple, simple. ऐसा नहीं कि उधर से जाना है. Only 2 days in a year we have 12 hours of night and 12 hours of day. And then what are solstices? We have summer solstice, we have winter solstice. Summer solstice, if I show you like this, majority part which is receiving the sunlight is my northern hemisphere and southern hemisphere will receive less. Correct? Whereas just opposite. Sir, bhul gaya. Winter hemisphere, majority part will receive sunlight, northern, and southern part will receive less. So, how to understand this entire phenomena? We say it is nothing but the celestial movement. Is Earth is rotating or Sun is not rotating? Earth is rotating. Earth is rotating. Sure. What is Sun doing then? Nothing. Nothing. Doing lazy. What is Sun all about? It's a planet where which combustion is taking place? Helium combustion, continuous. They say whatever combustion or explosion takes place in Sun is 100 times powerful than a nuclear bomb. Does history has witnessed atom bomb? Forget about nuclear bomb. Second World War. Which part of the world has received 2 atom bombs from America? Hiroshima and Nagasaki. Where it is? Japan. Which country got it? America. Which date? That got answer, sorry, Geographic should please. 6th August 1945. Say? 6th August 1945. And the next atom bomb? America भूल गया. मैं बोला नहीं 2 दिन के बाद ही डाला. 9th August 1945. 3 दिन. So what was the effect? Hiroshima and Nagasaki devastated. Next 3 months they could not see the sun also. Clouds, perfumes, dust. And it was a total mess. So even one pot of sun, that combustion falls to earth, what will happen? Earth is roasted like a tandoor. You know what is a tandoor, no? Yes. And how big is our planet? We have no ideas. The biggest planet? Jupiter. 54 times of the earth can be fitted into Jupiter. Imagine if we could have started living on Jupiter, what will happen? So space है, जगह ही जगह है ना? बस आज अगर मैं गया तो 4 महीने के बाद मेरा घर पहुंचूंगा इतना दूर है ना? फिर आप बोलेगा तू तो 4 महीने, मैं तो 6 महीने के बाद इधर लेक्चर में आएगा. इतना नजदीक थोड़ी, मैं भी बहुत दूर रहता. So we always believe this entire 8 planets, not 9, including Sun, they have their own orbit. Can you name any one planet which has its own satellite? Saturn. No, Saturn. Earth. What is the satellite of the Earth is known as? Moon. कोई भी और planet के पास अपना खुद का satellite नहीं जो घूमते रहता है. You know about what is Moon and Sun, na? What is our Chandrayaan doing? Sir, photo shoot चालू है. Chandrayaan 4 is now activated again. Initially it was not activated. You know, every 14 days only they get sunlight. And the temperature drops to -200. No, -200 matlab, can't imagine what's this. But then we always believe, sir, whatever you say about the earth, it's fascinating. Why it's fascinating? Because you and me, where we do live on the earth, are we living on the earth, over the earth, or inside the earth? On the earth. Sure. Yes. Where? Which part of the earth? Crust by the earth, right? And then I showed you lovely videos about Pangea. You remember that explosion? रिया को वो वीडियोस बताया सर ने इससे सब देखा नहीं बताया शायद मैडम ने पूछा भी नहीं. She coming for the first time, sir. What did you ask? क्या हुआ? What did sir do? This is my first time. What did he say? अभी नहीं किया. अच्छा ठीक है पूछा ना उसने तो क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने बोला कि मैंने उसने पूछा कि सर कैसे है मतलब कैसे सिखाते हैं वगैरह पूछा था. मैंने ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है मेरे को कुछ पता नहीं है सर. आपने क्या बोला?
तो अच्छे है, मेरे को तो पसंद है। ये तो अभी ठीक हुआ है, सर। एग्जाम ठीक है ना, you don't worry. Listen, Riya, you are whatever lectures you have missed, you can come and ask me anytime. Okay. Don't worry. And boy, did you do the homework? Which History homework. worksheet? I'm saying history is saying worksheet only. ठीक है, no problem. Put the heading rotation and revolution. Just tell me what is the notes that I've given on that day. about rotation and revolution. Given all. No, you just give us two questions, one diagram. What is the question? Let me know. What is the rotation and what is revolution? That's it. Okay. Yes. Now you can write characteristics of rotation. देखो, at least Riya has asked who is the person, how he teaches. उन लोग अगर लेट आते तो ये सब पूछता? हाँ. किससे? रिया से? नहीं. And रिया तुम भी कुछ बोलना नहीं, है ना? Characteristics of rotation. Do you understand how it is? उसको जरा, hey boy, just show the notebook. Wait. हाँ, no. Shall I say the first point? Yes. आराम से. The Earth, to complete one rotation around the Sun takes 23 hours, 56 minutes, and 4.069 or only. Shall I give you a challenge? Every how many years we get a leap year? 4 years. Confirm na? Yes. And in that day we have Feb 29. चलो ये कैलकुलेट करके देखो क्या? ये हर 4 साल के बाद कैसे आता है. Let me see who is strong in mathematics. ठीक, this year is the first year. ये ऐड करके give me exact 24 hours. Understood what I'm asking? No. Didn't understood. देखो, we normally say Earth takes one complete rotation in 24 hours. Now I'm saying 23 hours. 56 minutes. Yes. 4.09 seconds. Now convert this into 24 hours. होगा ही नहीं सर. क्यों नहीं होगा? Fraction है क्या? 56 minutes है. Wait. Which year we get a leap year? After 4 years. So add 3 times more ना. चलो करो. 24 3. नहीं 56 plus 56 plus. हाँ. Plus ये दोनों को 4 plus 3 टाइम करो. Okay. Let's see who gets the. आराम से आंसर कोई तो. I don't know. Why not? देखो. Sir don't do. ना I'm not doing. 168. Now. है ना ये करो. So plus 56 plus 4.09 करो and try to show me 24 hours. चलो let's see. When I want to see how good are my students. आराम से. अब 24 hours को फॉर्मेट में कैसे लेकर आएगा वो देखो. No. 168 hours. 169 minutes. देखो 24 hours में कितना मिनट्स आता है? 24 hours में कितना घंटा आता है? 24 hours में 24 hours से आएगा ना. हाँ तो वो 24 फुल नंबर चाहिए. Okay. Almost got it. समझा? लिया देखो 24 hours मिलने के लिए ये 23 को एज इट इज कर दो. हमको ये पूरा मिला के 24 hours चाहिए है ना. तभी तो ये 23 से
24 hours कैसे हाँ, जाए? चला 168 hours 12.18 हाँ देखो, you got 168 hours 12.18 12.1 minute ना, हाँ ऐसा मिला ना? हाँ So if you want to convert this, let me add once. ये 12 minutes है, हाँ 01 correct? हाँ ये छोड़ देते हैं हम लोग. This is 10 correct? 8 6178 and this is 1 divided by how many? 24 is it? हाँ 24 hours है ना? yes yes हाँ 24 how much है? 90 नहीं 90 नहीं 5 वो fours are कटिंग मत कर रहा 20 सर वेट हाँ सर 5 fours are 5 twos are then 9 18 नहीं है ना 8 are करते हैं हम लोग है ना 8 fours are 32 correct 192 192 हाँ 119.2 है 24 into 8 192 into कैसा division डेसिमल नहीं है डेसिमल में आएगा देखो we have 24 hours correct but we are saying only 23 hours so if I get 1 hour मुझे 60 minutes मिलना चाहिए 60 minutes मिल गया तो I'm good ना plus 60 1 hour कितना होगा 24 हाँ तो ये मुझे मिलना चाहिए ये पूरा कैलकुलेशन must lead to 1 hour 1 hour देखो अभी 60 minutes मिल रहा है क्या देखो 15 आया 59 आया 15 15 तो पॉसिबल ही नहीं है मैंने क्रॉस में एक काम करते हैं आई विल मेक दिस एज होल 56 मिनट को एक काम चले से 60 है ना वो छोड़ चले देखो आई डू इट वेरी सिंपल इफ इट इज आई से 60 मिनट्स फॉर 1 year multiplied by 3 है ना and multiplied by 4 हो गया हाँ 4 साल में ये पे रहता है ना हाँ I multiplied by 4 I make it this as whole 56 हाँ plus 4 09 हाँ seconds छोड़ो 60 minutes multiplied by 4 4 6 are 24 hours आ गया हाँ ये तो समझा सर आपने वो 09 छोड़ दिया और 60 एक लेके 60 into 4 हाँ somebody asked you how many exactly you said 23 hours 56 minutes 4 minutes 09 minutes seconds actually but then if I convert this is into 60 directly multiplied by 4 so what do I call geographers as master of all trades but sorry jack of all trade but master of none वो क्यों बोलते हैं have you heard नहीं देखो geographers like if you are studying full geography now you are treated as like this you are jack of all trades you know who is a jack ना हर जगह बोलता है ना मैं उनको जैक बोलता है बट मास्टर ऑफ नन guess why geographers are called like this I study physics little bit gravity वगैरह I study chemistry पूरा chemical composition I study math अभी मैंने कर लिया फिर बायोलॉजी लिविंग नॉन लिविंग है ना फिर जूलॉजी छोटे छोटे एनिमल सब कुछ करेंगे पर किसी का हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं क्या तो इसीलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ अच्छा है सर हर चीज में ना ये ना मैं बोलती हूँ सर कुछ डिटेल नहीं मालूम ये बोलते हैं ऐसे ये तो कुछ भी नहीं बोलते ये तो जीरो ऑफ नन है एग्जैक्टली मजाक दोनों मिलकर बोलेंगे सर वो तो है सर ही इज जैक ओनली तो why this geography so become special because this is the reason अभी सडनली कैलकुलेशन है तो सब लोग सर ये मैथमेटिक्स में क्या कर 10th standard you have lot of math lot of numericals you have that ICSE in geography why not I teach every year and map also that is not the normal map एक टोपो शीट करके है अरे वाह क्या है टोपो शीट के बारे में क्या आपके फ्रेंड ने क्या बोला वो डिफिकल्ट है कुछ नहीं समझ में आता है 4 फिगर ग्रिड है 6 फिगर ग्रिड है सर 4 फिगर 6 ग्रिड पता है उसका डिटेल्स भी है कब फिगर देके ग्रिड पूछेगा ग्रिड देके फिगर पूछेगा
टोपो शीट मैप मैं तो देखा था 10th में है I teach every year but all my students say it's difficult. No, it's so easy. Why? So because you have studied all those things and Oh, you she's practice telling me. now. During my school days also it was easy because when something new things comes na challenging, I will not sleep. ये क्या है ऐसा नया? पहले पढ़ो. हम challenging आते बंद करो. हाँ, बोला अरे और challenging है, फिर book नहीं चाहिए. और challenging मैं बाहर निकल जाता है. So what do we say? Love the challenges or run away from the challenges? Sometimes yes, sometimes What is that? Sometimes. खाने पीने का challenge तो मैं अपनी रखी है. Studies challenge नहीं वो आप करते. आप ही का इधर पार्टी कर. चलो अच्छा. Let's write the second characteristic. Okay. Earth is inclined towards the pole star. So where is the pole star? North side. Right, very good. That word is not Towards the pole star. Earth is inclined to pole star. Not to the क्या वो क्या उसका कोई favorite Towards है? the- Towards the pole star. Hence, while moving, while revoluting also, it maintains it tilt. You remember I showed you a video? वो पूरा घूमता है तो भी वो tilt वैसे ही रखता है. Don't worry, today there will be no retro, maybe like that. revoluting also. It maintains it tilt. How much is the tilt? Write down and keep. 23 degree na? 23 and a half, right? I think 23. Maintain its tilt. Now bracket you have 23. Next. Earth rotates. Earth rotates. हाँ. उसके आगे रुक जाओ. At equator. Somebody wants to tell me this. At a speed of 1660 kilometer per h per hour. Look at the speed of this. But towards the pole, the speed decreases. Who can tell me why only center में इतना ज़्यादा speed है उसका? centrifugal. Very good. अच्छा ये remember. So what does that centrifugal means? When Remember the I showed you a video the- जिसमें बोलता है हाँ अर्थ को अगर आप लोग पोल से देखेगा बहुत फास्ट घूमता है ना? The side bulges. This side is bulging and this side is tapering इधर जाता है. तो इधर उसका maximum speed है. What is centrifugal force? The center is attracting all the things which are there on the border. And why you and me are not rotating? Because of this force. Because we are stuck to it. नहीं sir, we are moving. अरे तेरा movement और अर्थ का movement में जमीन आसमान का फर्क है. How much speed you can walk? Sir, 2 kilometer, half a kilometer, less than 1. और ये कितना speed में घूम रहा है? किधर? 1000. Can't even think कि कितना speed है उसका. But इतना speed घूमता है, you and me are stuck to it. पता नहीं कौन सा फेविकॉल है और कुछ जोड़ है. So we literally don't feel that Earth is rotating at such a speed. But when you go to the poles, the speed slowly decreases. Why? Because The mass of the Earth is maximum in the center. You remember I told you that one planet has entered into the Earth's interior. That was the hottest planet and it's still inside. And that is why that molten magma and lava is inside. And what do we get outside? lava. But that is called as what? Volcano. Hey, my dear Ria is totally clueless. My video दिखा रहा था, don't worry. These guys were enjoying my 2-3 lectures. ठीक है? It's okay actually. Okay. Now let us write the effects. Out of the 3 points I've explained all. Now let us write effects of the rotation. I'll give very short notes, huh? Short in the sense you'll get marks for that.
effects. Let's write 1, 2, 3 and so. Due to the Earth's rotation, occurrence of day and night is made possible. Due to the Earth's rotation, occurrence of day and night is made possible. Possible. Second point. Who can explain to Ria how rotation and day and night are connected? You can. Yes. When the Earth rotates, the side which receives the sunlight goes in the day side, and when again it rotates, and the part which doesn't get sunlight gets the sunlight. समझा क्या बोला? समझा? क्या समझा? So like when Earth is rotating and जो एक sunlight side जो हाँ जिसमें sunlight पड़ रहा है उस पे day होगा और जो पीछे का पार्ट है वो जब आगे आएगा ये पीछे का पार्ट ये भाई साहब ने बोला पीछे का पार्ट मूड हो जाएगा मूड हो जाएगा मूड नहीं नाइट हो जाएगा ठीक नाइट है नहीं this is sun मूड हो जाएगा how beautifully you explain that okay now this is getting sunlight yes so this part is day and this is night when it comes here this part gets day and this part is night similarly when it comes here this part is day यही तो बोलना था तुझे but sir God it but was sir then do wait this part is day and this part is night because purposely I have drawn the earth in such a way देखो some days are longer nights are shorter here days are shorter nights are longer but both are equal एक example बोल रहा हूँ this represents seasons too ना ना so what seasons के साथ day and night भी तो आता है क्या summer में only day रहेगा क्या night नहीं रहेगा तो सोएगा नहीं summer में even we talk about that lights in Norway what is that lights are known as aroma नहीं Aurora borealis and Aurora australis इसको scattering of light बोलते हैं pink and blue color में दिखता है but is very rare in what sense हर जगह नॉर्वे में नहीं दिखता है but you can catch a glimpse of it अगर आपको earth instead of blue color suddenly आपको pink में दिखा तो how it is so what is this मतलब कुछ नहीं this is Aurora borealis lower right because there are some celestial phenomena I don't know during your school days whether you have seen or not मेरे पापा मुझे सुबह 4 बजे उठाते थे चलो वो meteorites है ना जब गिरता है छोटा it comes like a ball of fire जैसे जैसे अर्थ में आता है ना that fire extinguishes and only एक छोटा सा दिखता है तो क्या बोलते हैं हिंदी में धूमकेतु हाँ धूमकेतु because I've seen some during our school days lovely movies were made only on this phenomena. You know how the planets are named just because of the scientists who are involved in it. Did I teach you two discontinuity? But structure में more अभी नहीं हुआ अभी तक ठीक है तो देखो however science has developed however we have studied about the earth still has a lot of mysteries you believe yes really so are you interested to know more about yes it sir yes so you should go to certain science laboratory or अभी हिंदी तो लेके नहीं जाता है if I get some parcels we will see especially we have this Nehru Science Center in Worli सुना है they tell you all the videos that's the right time you should also see certain new videos and the old videos she was just absent doesn't mean and
है ना, bang मतलब explosion. हाँ. How about the other theory? Charles Darwin theory of evolution. ये नहीं बोला मैंने? Life originated on the earth in which form first? Which form? Human being came first. Human being came first. No. Mammals. No. Sure. No. Then who came? Some microscopic organisms. What was it? Green. Green plants. No. It was bacteria only. Already have that. And the first molecule which busted up, and there was a noise produced. You know what was that noise? Nobody knows. Scientists proved. Understood. Oh. You don't know. I saw it. That is why when we do some meditation, we have to. And that entire epiglottis, you know what is epiglottis? The inner throat. You'll feel the vibration. वो बहुत कम लोगों को मिलता है. So at least now the eyes are paired with these two guys. Hopefully. Don't worry, relax. I will support. चलो. Day night हो गया. Sunrise and sunset दिया मैंने. नहीं दिया ना? चलो let us write. Earth rotates from west to east. Earth rotates from west to east. Helps in the sunrise and sunset. Helps in the viewing of sunrise and sunset, which is from sunrise sunset कैसा होता है? East to west. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन होगा तो हम लोग दोनों नहीं देख सकते. West to east helps in the viewing. Viewing. You know what is viewing? VIEWING. Of sunrise and sunset. ब्रैकेट में कौन सा डायरेक्शन? सनराइज ईस्ट में होता है, सेट होता है वेस्ट में, है ना? सनराइज एंड सनसेट. नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. Duration of day and night are not equal. Throughout the world. Are not equal throughout the world. Next. Effect, Coriolis effect. That day this also explained, correct? Coriolis effect. These guys will tell you the definition, don't worry. Helps in movement of winds and ocean currents. अगर रोटेट ही नहीं होगा तो फिर कोरियोलिस इफेक्ट कहाँ से इफेक्ट करेगा, है ना? Then next, the speed of the rotation. The speed of the rotation creates centrifugal force. Creates the centrifugal force which results in bulging of the earth in the middle or in the center. Bulging, BULGING, results in the bulging of the earth in the center and flattening at the poles. And flattening at the poles. Is it correct? Correct. What is Coriolis? It is given when flattening at the poles.
Let's Coriolis, man. When, for example, I mean, this bottle is rotating fast, है this is here. I make this bottle rotate fast, and you are heating it with one substance. A penny broker is good. If it is not rotating, it hits and go back this direction. क्योंकि constant है ना? ये fast rotate कर रहा, hit कर रहा, क्या पता वही direction में return भी आता है, U-turn मारता है. And what is centrifugal? That force which is keeping all the substance tightly packed in one place. Because अभी हम लोग lithosphere में चिपका है. Because Earth बहुत fast घूम रहा है, और center bulky है, and poles, you know, north and south pole flattened है. In fact, इनको मैं latitude and longitude से क्या है, north pole ऊपर जा जाके क्या हो जाता है? एक dot हो जाता है. Yes, cool. It's what's suggested. ये पार्ट कैसा है यार? Thickness ज़्यादा है ना? Well, let's say this part is thickness more. No. Only this much. Yes. This part nothing. This part nothing. This part nothing. This part nothing. अब बोले इधर ये क्या है? एक dot ही है. इधर भी एक dot ही है. Not understanding. It's rotating fast. How much is the speed at the center? 1660 kilometer. 1660 किलोमीटर. उसके लिए ये जो फ्लैटन मतलब मिडिल पोर्शन है ना बहुत बल्जिंग है, ये भी है, बट इसका स्पीड जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल में जाते हैं becomes less. Why less? Because mass is very less. अभी if I rotate, कैसे rotate करते हैं? अच्छा इसको रोटेट चाहिए ना है ना? देखो अभी ये पूरा प्लेट का पानी इधर नीचे है, इट इज नॉट रोटेटिंग. अच्छा ऐसे ये भी नहीं करेगा, है ना? करेगा. हाँ करेगा. So मतलब at the center if mass is more it will rotate faster. This pole and this pole it is less, it will rotate very slow. इसी को centrifugal force. So whatever the centrifugal force is keeping the substance attached or intact. And then I think she didn't see that video of that Pangaea. What is Pangaea? The big mass of continents. And what it started moving. But sir, वो north pole में dot है, south pole में. क्योंकि इतना छोटा हो जाता है वो सरफेस, मतलब छोटा लास्ट में छोटा सा डॉट ही है ना? And that is why it is so slow. But middle it is very fast. I don't know whether you have gone or not gone. I have worked in a country called Singapore for 4 years. Singapore में आपको ऐसा लगेगा कि दिन रात बहुत फास्ट जाता है, because it's right just above the equator. Every day rainfall. 4 बजे के बाद heavy rainfall होता है. Almost हफ्ते में 5 दिन तो rainfall होता ही. And हमको ऐसा लगेगा कि पूरा साल बहुत जल्दी निकल गया. जबकि I stayed in polar region. उधर 3 साल काम किया था मैंने. उधर ऐसा लगता था यार ये दिन जाते क्यों नहीं, है ना? दिन जाता क्यों नहीं? विंटर आता तो और स्लो हो जाता. और सॉरी टू से KUTT भी रोड पे चलता नहीं. इतना हेवी स्नोफॉल है, कौन चलेगा? पूरा इकोनॉमी स्लो, कोई काम नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं आएगा. -9 is the degree. फिर I call one of my friend, वो मेरे से 250 miles दूर रहता था. अरे क्या कर रहा है? अरे मैं तो इधर मर रहा हूँ यार. मैंने क्या है? -40 है. और तू क्या कर रहा है? -9. अरे मजा आ रहा है यार. काय का मजा? At least I was living in main town and city. कभी इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होता था, कभी लाइट भी बंद, पानी भी बंद नहीं होता था. वो बोलता था उधर तो पानी का पाइप है ना, it gets expanded बस away. ना पानी नहीं है. टिश्यू हाँ वो है. काम चल रहा है इधर. पीने का पानी उनको कैसे तो मिल जाता है. और इलेक्ट्रिसिटी तो एक हफ्ता नहीं है. तो लोग लगा हम लोग वो हीटर पर रहता है, वो क्या वो ऐसा रहता है ना वो वैसा. हमारे यहाँ पर तो 24/7 हीटर चालू रहता है. बाथरूम में भी रखना पड़ेगा ना, उधर से भी तो भाग के क्या करेगा ना, ये कैसा. And then when I came here it is exactly opposite. There I have to wear 6 layers of clothes. 6 layers सोचो. और इधर आके 2 लेयर पहना बिना ऐसा लगेगा शेफ पूरा स्नान करके बाहर आ. मतलब कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेट है. सो अगर आप पोल्स में जाके रहेगा ना, यू विल फील 1 day is like 4 days. आप अगर इक्वेटर के उधर आएगा ना, आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि बस यूं निकल गया. ऐसा नहीं, नॉर्मल टाइम से ही जाता है, बट वो पैसेज ऑफ टाइम बिकम्स वेरी फास्ट. देखो विंटर यू माइट बी लविंग इन इंडिया, सर नाइट्स है ना सर
14 घंटे का होता है सर। अरे वाह। और दिन ओनली 10 घंटे का ही रहेगा। समर थोड़ा ऑपोजिट होता है, डे विल बिकम 11 और 12 hours एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर। देन फिर हम लोग एक एनिमल का पिक्चर देखा, उसमें पोलर बेयर है ना, वो विंटर में तो उठता ही नहीं, वो सो ही जाता है। अब जो कैसे विंटर में, मैं तो क्या कर रहा था, ओए विंटर में तो -80 डिग्री है, फिर ठीक है उसको सोने दो। अभी -80 में बेचारा जिंदा है, एंड 4 महीने का उनका समर रहता है। समर कुछ नहीं है, 2 डिग्री का रहता है समर। 2 डिग्री में -40 या 80 से तो बेटर ही है। इन इंडिया ऑल्सो वी आर स्पीक अबाउट द्रास एंड कारगिल। अगर आपको मुर्गी का अंडा का ऑमलेट खाने का है द्रास एंड कारगिल में, आप अंडा तोड़ ही नहीं सकते। हाँ, इट बिकम सो रॉकी। एक गिलास पानी पीने के लिए आपको 4 आइस क्यूब तोड़ के डालेंगे तो 1 गिलास पानी मिलेगा। यू डोंट नो, इंडिया में है प्लेसेस द्रास एंड कारगिल। एक कारगिल वॉर नहीं सुना? हाँ, वही प्लेस है। हमारा बेचारा वो रेंजर्स है ना, फॉरेस्ट रेंजर, हमारे सोल्जर्स पोलर बेयर की तरफ डेस्क करके रहते हैं, और 2 गन भी लेके चलना पड़ता है उतना ठंड में, क्योंकि चाइना कभी भी अंदर घुसने का चांस है। और जो भी उधर 6 महीने का ही पोस्टिंग रहता है, उससे ज्यादा नहीं, उसका ब्रेन का इश्यूज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता सप्लाई। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में बेचारा रहता है। कुछ लोग तो बोलते हैं उधर ही मेंटली रिटायर हो जाता है, क्योंकि आपका लंग्स ब्रेन सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई तो उधर मिनिमम रहता है। फिर कोई तो बोला सर क्यों उधर मरने के लिए गए? सर अगर वो मरने के लिए नहीं गए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, चाइना घुस जाता है। सो लुक, इंडिया इज अ कंट्री विच हैज ऑल काइंड्स। फिर आपको राजस्थान में पोस्टिंग कर दिया द्रास से उठा के, है ना? राजस्थान में बेचारा वो 54 डिग्री में कैमल पर बैठा है। ये क्या है सर, किसको बिठाया आपने? एकदम गर्म और ऊपर से ये भाई साहब भागता है। उधर भी खतरा है, पाकिस्तान रेंजेस अंदर आते हैं। This is very troublesome, sir. So India provides you all kinds of things. फिर भी छुट्टी मिलती है हम लोग इंडिया से बाहर भागने का कोशिश करते हैं। कॉलेज में सबसे बड़ो इधर है ना, थाईलैंड में इधर क्यों इंडिया छोड़ सर, वो आपको मत सर, हमको तो बाहर। So इंडिया में एटलीस्ट ये सीजन और क्लाइमेटिक चेंजेस तो दिखता है, बट वेरी फ्यू कंट्रीज हैव दीस। अभी आई हैड लिव्ड इन अ प्लेसेस 6 months तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं दिखता है, सन ही नहीं देखा हम लोगों ने। फिर कैसे जिया ना, जैसे सब लोग जी रहा भी वैसे ही जिएगा। How do you enjoy? Very good, very good. मतलब मरो और खुद को भी मरो। और हमारे मम्मी कैसे है? बहुत बढ़िया। फिर हमको भी आप बताओ तो, अरे तू तो एंजॉय बहुत एंजॉय करता है। फिर अगर मैं रोएगा ना, तू खुद ही बोला था बहुत एंजॉय करने का, क्या करता तू? इधर से जाते ही बोला था समर कुछ भी हो मुझे नहीं जीना, विंटर में मैं जीऊंगा। कैसे जिएगा? पहले दिन ही विंटर आया तो 1 डिग्री में उतरा, फिर दूसरा दिन देखा तो 0 के नीचे गया, फिर 6 महीने तक 0 का ऊपर भी नहीं आया, सब माइनस पे जा रहा है। एंड एवरी टाइम अमेरिकन फ्रेंड्स हाउ, मतलब वेरी गुड, हाउ वेरी गुड। अब उसको थोड़ी बोल सकते मैं तरह के मार रहा हूं तू तेरे साथ। वी ऑलवेज, हमारा जो ये ह्यूमन ब्रेन है ना जल्दी अडॉप्ट नहीं करता है। सिंस बर्थ आई हैव बीन बोर्न इन बॉम्बे एंड ब्रॉट अप, एंड उधर जाके जब समर गया दे वर सेइंग इट्स वेरी हॉट, वेरी हॉट। पूछो टेंपरेचर कितना रहेगा? It was just 23 डिग्री, और इधर 23 मतलब मराठी मानस बोलते ठंडी वास्ते ठंडी वास्ते, और उधर वो मेरा अमेरिकन फ्रेंड पूरा एसी ऑन हर जगह, मतलब रहने देना, ओह इट्स वेरी हॉट मैन, नो इट इज हॉट मैन, ये मतलब कोल्ड है, 23 so hot, and I'm like it is not hot, it is for us it's a bit cold, don't worry you have to wait for the winter. अरे You wait man, you wait. तो जैसे वो अक्टूबर में नहीं, आई थिंक जुलाई या अगस्त के बाद ही विंटर पकड़ता है। जैसे अगस्त 15 और उसके आगे गया, तो he said now the winter is setting in. Now I am prepared, I love it. तो पहला 7 डिग्री पहला दिन, दूसरा दिन 0, तो 7 डिग्री है तो मुझे थोड़ा टेंशन आया यार, ये सही बोलता है, राइट? फिर 1 डिग्री, फिर 0, फिर हेवी स्नोफॉल। तो घर का दरवाजा ऐसा खुलता था ना, यहाँ तक आइस रहेगा, तो पूरा वो शॉल से उठा के डाल के फिर निकल निकल। हाँ, फिर हमारा जो कार से, मेरा खुद नहीं था, मेरा दोस्त का था, वो कार ऐसा लगेगा कार अंदर है और पूरा आइस से बना दिया कार को किसी ने।
और दरवाजा खोलने के लिए लोग ऐसा लाइन खींचते हैं, कच रोड खुदा फिर, बट इंजन उधर स्टार्ट हो जाता है। रशिया में कोई तक जगह दैट दे वर सेइंग दे हैव टू कीप योर कार ऑन फॉर 24 आवर्स। अपना कार का इंजन एक बार बंद किया तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, इतना ठंड। पब्लिक फिर भी रह रहा है -60 डिग्री। फिर ये सब सुन के हमको लगता है रुको सर हमारा ठंड तो इतना भी नहीं है। फिर हम लोग जो नौटंकी करता है ना, but we are not used to it. Did I not explain what is this jet lag? She knows. What is jet lag here? No, I thought General. What is jet lag? Have you heard about from your family friends? तो जैसे मैं उस कंट्री में था, हमारा और उनका 12 घंटे का डिफरेंस। जब मैं फोन करेगा ना तो बोलेगा नहीं मुझे नींद आ रही तो फोन कर, बोला मैं तो अभी उठा है, ठीक है ना हम लोग तो अभी सो रहे हैं। उधर का सुबह का 9:30, इधर का रात का 11 बज रहा है, एग्जैक्ट 12 घंटा या 12 घंटे से डिफरेंस। When I came back to India, I can't sleep for the next 2-3 days. Why? मेरा ब्रेन उधर का टाइम का एक्सेप्ट करता है। You know, brain is a wonderful thing. जैसे ही आफ्टर 6 हो जाता है ना, it gives a signal कि सनसेट हो रहा है, तो जाओ 2-3 घंटे में सो जाओ। ये तो सिटीज है, लाइट्स है तो उतना इफेक्टिव दिखता है। आप गांव साइड में चले जाओ 8-9 कैसे भी आप सो लीजिए, बिकॉज ब्रेन अडैप्ट्स। तो बचपन से आपका ब्रेन वैसे ही सोच देखता है 6 बजे 9 बजे के अंदर सो जाए। यू हैव गॉन टू अ प्लेस, इंडिया का टाइम का 9 o'clock है नाइट, उधर सुबह का 8 बजे। So what will the brain do? The brain will ask you to sleep. At least 2-3 दिन तो आप सुबह का 9 बजे उधर सोए गए। मेरे साथ ऐसे ही हो। अरे what are you sleeping? बोला एक सुबह नाइट का टाइम है, तो 2 दिन तक ब्रेन देखते हैं और मैं तो सो रहा है पर इधर तो सनराइज है। एंड ब्रेन अपने आप को चेंज करता है स्लोली, नहीं अभी सोने का नहीं, अभी जागने का टाइम। That is why they say which lag? Jet lag. आप कौन सा भी फ्लाइट से उड़ो जेट लैग ही बोलते हो। तो ब्रेन फिर 2 दिन के बाद थोड़ा अडैप्ट करता है, अच्छा इधर मुझे सोना है उधर मुझे जागना है। चलो उधर मैं 6 महीना 1 साल में 3 साल था, फिर देन आई केम बैक, इधर आके मुझे नींद नहीं आई। ऑलवेज स्लीपिंग एंड ओपनिंग माय बुक एंड डूइंग कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा हूं, नींद नहीं आई। अरे आप उधर सुबह का 9 बजे है ना। अगेन हियर इट विल टेक 2 days. ऑल आर डोजिंगली स्लीपिंग, मॉर्निंग 6 o'clock उठते हैं, मैं बोला अभी मेरा 9 बज गया मुझे सोना है, अभी तक मॉर्निंग हो गया तो क्या हो गया, मेरा उधर सोने का टाइम। So this is what we say that when you are moving to different parts of the world, our brain gets confused. मेरा एक स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी से एक व्हाट्सएप रखता हूँ, ब्रेन को बोलता है तो रीड कर ले, अभी मैं इधर आ गया, ऐसे थोड़ी ब्रेन करता है। ब्रेन इज एडजस्टेड टू द सन्स मूवमेंट। देखो उस टाइम पर बहुत लोग के पास वॉच नहीं था, एंड इवन टुडे यू आस्क देम ये कौन सा टाइम है, दे विल टेल यू एग्जैक्टली, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द सन। अभी किधर है, सन हो या मून हो, ये all digital watches coming. Yes. And what is this digital clock doing? You know what is it doing? You are the slave of that digital watch only. रुको सर, कल ही पापा ने नया वॉच लेके दिया है, मतलब उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहता है बट इधर तुरंत दिखाता पल्स कम हो गया। चलो रुको सर, अरे वो जो दिखाता है वो नॉर्मली, नो सर इट इज एक्यूरेट, बहुत महंगा। अरे एक्यूरेट है तो रहने देना, रिमूव दिस एंड थ्रो इट आउट। It has made you sleep, कब उठने का, कब जागने का, कब पानी पीने का, इवन ब्रीदिंग का भी मैंने देखा है, मेरे पास भी आई डोंट वेयर इट, ब्रीदिंग का भी दो। हां क्या ये तो नहीं पता मुझे, मालूम है व्हाट टू ब्रीथ इन व्हाट टू स्लीप। टेक्नोलॉजी हैज रियली मेड अस स्लीप, बिकॉज़ बिफोर द रिमोट वाज इन्वेंटेड, आपके घर में कभी झगड़ा हुआ है टीवी ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए? कुछ नहीं। इनफैक्ट आई एंड माय सिस्टर जो ऑन किया वही चैनल चेंज करेगा। अभी किधर ऑन, मैं एक रिमोट से चेंज करता हूं, पापा दूसरा रिमोट से चेंज करते हैं, है ना। इतना झगड़ा चालू है रिमोट की वजह से, फिर टीवी नीचे गिर जाता है, ओ रिमोट पकड़ के बैठे। हां, रिमोट हैज मेड यू एंड मी आलसी ओनली ना। सो द मोर इज द टेक्नोलॉजी कमिंग, द मोर ह्यूमन ब्रेन बिकम्स वीक, द मोर यू आर मैनुअल। देखो यू गो टू अ जिम एंड रन फॉर 2 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स, मेरे दोस्त लोग हैं कुछ, तो 5 किलोमीटर कहां से कहां भागे, कहीं नहीं भागे, उधर ही भागे। ये एक ही जगह पर, अरे वो ट्रेडमिल में भाग रहा था ना, तो मैंने बोला एक काम कर, फीस कितना है, 9,000 रुपए, एक काम कर 2,000 का एक बाइसाइकिल ले, हर रोज तेरा ऑफिस। मैं नहीं जाएगा बाइसाइकिल। इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइसाइकिल, लार्जेस्ट।
Chinese are the largest user of bicycle. Understood what I'm saying? तो उनको उतना दिमाग बीमार नहीं होता है, हमको ही होता है. फिर हम लोग जिम लगाते हैं, what is it, Zumba, I don't know what all the things these ladies do. खाएगा 15 पराठा, फिर बोलेगा रुको सर, मैं थोड़ा डाइटिंग में 15 नहीं सर, पहले 30 खाता था. फिर जाके जिम में जाके वर्कआउट, सर फैट्स बढ़ गया, फिर बढ़ेगा ही ना. सर फिजिकल वर्कआउट कुछ नहीं, टूसता रहता अंदर. हाँ सर थोड़ा सा, मतलब कुछ नहीं है, खाने डाइट इज द बेस्ट. कैसे करने का सर, नहीं होता है. मतलब करो. You and me are only sitting and studying. Imagine the school children of गांव, बेचारा 2 नोटबुक लेके भागता है 5 किलोमीटर. है ना? हमारा बच्चा नहीं, मम्मी आज स्कूल जाने का. हाँ बेटा, क्यों मम्मी? सर बेचारा ब्रश तो लगा देता बट ब्रश नहीं करता है ना. बाय द टाइम स्कूल बस का मम्मी था मार दिया स्कूल बस में. स्कूल बस में बच्चा सो के ही जाता. मतलब कितने सर, आधा घंटा लगेगा सर. एक जगह से उठा के पूरा सिटी घुमाता है बेचारा, फिर जाके स्कूल में पुश करता और उधर टीचर और बेचारा 12 साढ़े 12 का वेट करते. हो गया, चल निकल बस. लुक हाउ द ब्रेन इज गेटिंग एडजस्टेड ना. बट मैंने बोला ना स्कूल बस, ना पापा ड्रॉप, ना ऑटो, चल के जाओ. जल्दी उठो, फिजिकली भागो, वर्कआउट हो गया. हाँ सर वो तो है, बट आप खुद तो बाइक लेकर आते हो, हमको क्या बोलते चल के जाओ. हाँ है ना. So this invention has made you and me far away, but then there are people who are still accustomed to that. I'm sorry to say, आपका कोई भी organ उतना सपोर्ट नहीं देगा जितना आपका ब्रेन. And every day and night this आप अपना ब्रेन और किसी का सुनता नहीं, आप ही का सुनता. अब आज एक बोलो सुबह से शाम तक मैंने ये काम नहीं किया, कल में ये काम करने के लिए 4 बजे उठेगा, naturally will get up at 4. मेरा ब्रदर है एल्डर फेलो, उसका वो कौन सा वो ओम नमः शिवाय का कुछ गाना रखता है, पूरा घर उठ जाता है अलार्म से, बट वो नहीं उठता. वैसे सोचता है, बोले क्या अलार्म है? बोले तुझे अलार्म रखा है, पूरा घर उठ गया, तू अरे बहुत टायर्ड हो गया. बट एकदम रेडियो से भी आवाज ज्यादा रखता है. 90% ऑफ द टाइम आई आल्सो अलार्म, आई डोंट कीप एनी साउंड्स, इट्स नॉर्मल ट्यून. बट उसका 5 मिनट पहले बंद करके मैं उठता. हाँ भाई तू टीचर है ना भाई, तो कुछ भी बोलता रहता है. मैं तो सुबह 11 बजे जाता हूँ, रात को 3 बजे आता हूँ. And why are you keeping at 5:30 alarm? नहीं, बस मुझे जल्दी उठने का. मत रख, दूसरे को उठा देते, तू सोता है. The brain has to accustom. So when I thought about this, what is that? Rotation, revolution, na? This day and night and other season climate, it's all in your brain. And brain को आप जितना train करेगा, देखो you are the most brilliant. Thomas Alva Edison invented bulb. बोलता है कि हर इंसान का दिमाग ओनली 600 ग्राम का रहता है. 600 ग्राम 580 to 600 ग्राम रहता है. उसका ग्राम ओनली 25 ग्राम ज्यादा था, 625 ग्राम. तो बड़ा साइंटिस्ट बोला. हाँ, आर वी शार्पनिंग आवर ब्रेन? 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 9 good, 9 + 17 good, क्योंकि कैल्शियम आ गया. You know there is something called as Vedic math. They teach you how big. Vedic math कुछ नहीं, सब इधर ही है. But what are we doing? देखो ना सर, कैल्शियम क्या चीज़ है. अभी this calculation also becomes so good. मैंने बोला छोड़ो वो सर, सिर्फ 4 घंटा पकड़ो, multiplied by 4 hours हो गया, 24 hours. So we always do that. Whatever climatic changes, whatever physical changes in the earth is involved in you and me. Anybody knows what is Kundli? क्या होता है वो? Something in astronomy. When I am born, there are some stars and movements, so it controls my character. There's a lovely book, if you have the good habit of reading. Men are from Mars and women are from Venus. मतलब मैन को मार्स का जो प्लैनेट है ना कंट्रोल करता है, और वुमेन को वीनस. और वो उसका जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यू एंड मी एक्ट. हाँ मतलब मैं अपने में नहीं, कुछ नहीं. Sometimes your dad is at a very angry mood. हाँ, उसी के बेसिस पे रहता है, सनसाइन एंड मूनसाइन. नहीं, she believes good है. कोई तो नहीं, मैं इसको भरोसा नहीं करता. नहीं करना पड़ेगा. I gone to a place where he told me exact time of death, exact date of my death, and exact year. I know that. 1 week I was unable to sleep. यार मैं इस एज में मरने जा रहा हूँ ऐसा. But sir, how did astronomers know all of this? Not astronomer, he is a different fellow, I will tell you. No, I'm asking. Calculation, mathematical calculation.
1 week तो मैं किसी को बताया नहीं, but I was unable to sleep. अभी मुझे मालूम है ये डेट पे फिर कैसे जिंदा है, छोड़ो ना, जब जाएगा तो जाएगा इसमें क्या, मतलब how they calculate, this is very difficult to say. It is correct or 99% whatever he says it is correct. They take only my first this imprint and then they ask me my name and date of birth और कुछ नहीं पूछते, मेरा माँ, मेरा डैड, मेरा बहन, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट सब बता देते हैं. And जिस वर्ड्स में लिखा था it was old language, I tried to take a picture and try to decipher, नहीं हुआ, वो पूरा पढ़ता है. 5000 years पहले ये हमारा एस्ट्रोलॉजी में लिख कर गया. अभी इस बच्चे का अगर उस जगह पर मिल गया ना, she will get all the details. But very few people have the daring to. वो पूछते आपको डेथ का डिटेल्स सीखना है, हम बिंदास करते हैं सर, आप बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ता. कोई भी इंसान को दिखा हुआ अभी तो कल ये डेट पे मरेगा तो कोई भी डरता है, ठीक है अभी क्या है. तो मेरा फैमिली में किसी को मालूम नहीं, बट वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज इन लंदन, उसको मैंने बता दिया, बोली मेरी यार तू इतना डरता है, रुक ना, जब जाएगा तो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. सो दीस आर ऑल प्लैनेटरी मूवमेंट्स. फैमिली को नहीं पता? नहीं पता, क्यों पता, दे विल बी ट्राइंग फॉर दिस, ये करके जा, वो करके जा. अच्छा इतना ही समझ आ रहा है. अच्छा उसके पहले ये सब कर दे, पैसा ऐसा पे कर दे. चलो लेट अस फिनिश दिस. So done. Let us go to the next step. Next point. Rotation also causes. क्या अपना टाइमिंग 4 o'clock है ना? Sure ना? 2:15. अच्छा. I can finish this chapter. Rotation also causes differences in the time over the latitudinal and longitudinal extent. Differences in time over latitudinal and longitudinal extent. Of different places on the earth. Is it correct? अभी मैं जैसे बोल रहा था, एक टाइम 12 घंटा पीछे रहेगा, एक स्टेट 12 घंटा आगे रहेगा. अभी आप differences over of places on the earth. That's it. Answer is done. Now we just read and mark. Everyone is having a volume ना? Yes. हाँ, खत्म करो उसको, बोल दो उसको क्या है, latitudinal extent. Latitudinal and longitudinal extent of different places on the earth. Come to page number 28. Inclination दिया है, but we have already done that. So we'll directly jump to revolution, or you want me to go? ये revolution नहीं आएगा. हाँ, inclination का effect दिया है 29. He will start reading, है ना? हाँ. Inclination कितना है? 23 degree. Okay, चलो. 29 effect. हाँ, 29. Effect of the inclined axis of season. The path of the earth around the sun is known as elliptic. Not known as, अच्छा elliptic, sorry. हाँ. Elliptic. It passes through the center of both the earth and sun. The earth's axis is not perpendicular to the plane of the elliptic, but it is tilted at an angle of 66.5 degrees. Okay. The axis is therefore inclined at an angle of 20. देखो ये मैंने बोला, ये आके एक्सिस ये है और अर्थ का इंक्लिनेशन कितना है 23.5 डिग्री, ये 66.5. इट मेक्स टुगेदर हाउ मच डिग्री? करेक्ट. तो हमारा अर्थ अगर ये पोजीशन में रहेगा तो भी ऐसे ही डिक्लाइन रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर आने के बाद उल्टा हो जाएगा. करेक्ट. दैट्स व्हाट ही इज मीनिंग. 23.5 from the perpendicular to this plane. As a result of this, in the course of Earth's movement around the sun, the North Pole remains inclined towards the sun. इनफैक्ट ये वीडियो भी दिखा है, नॉर्थ पोल क्या रहेगा, ज्यादा सन के तरफ रहेगा, तो नॉर्थ पोल विल हैव समर. इनफैक्ट ये वीडियो दिखा है. हां, कैरी ऑन. Sun for a part of the year, while the
will be same. There is no change. Okay, let's complete this quick. Same. That's right. Not right. He was reading, is it? Read. If the Earth's axis were perpendicular to the plane of the orbit, there would be equal nights and days at all places on the Earth. At all times of the year, there would be no seasons. Tilted axis and revolution of the Earth creates heat zones. Okay. Underline the word create heat zones. Leave it, effects will do it next lectures. Let us go to the last page of the same chapter. Come to page number 39. 1 and 2, leave it perihelion and aphelion. Because always I make this word very clear. What is perihelion and aphelion? Normally you get confused. Always remember like this. Perihelion is away from the sun. And automatically perihelion will be closer to the sun. So you remember the diagram like this. Abhi sun idhar hai, correct? And if Earth comes here and Earth is here, so this is perihelion or aphelion? As per this, perihelion, correct? And what is aphelion? Iska distance dekho और iska distance dekho. So whenever is that word perihelion, you write. अच्छा वो मत करो. I haven't taught. So you can solve question number 4, question number 5. Question number 5 only. Chalo, start solving. Then you can have your 15 minutes break after 5 minutes. 4 and 4 and 4 and 4. Yeah, very good. If you want to see what is अच्छा पहले करो. That also I can show you what is perihelion.
Yes, sir. Done? So you can relax. It's almost 1 minute. So next time when we are meeting, just help her to complete a notebook and volume. Okay? Same school, is it all three? No, Then what? I'm different. Blueprint. No, I'm different. Different in what sense? Like, this was a